seeker that was establishment. Number four, benevolent leaderships. In a security state, you will find leaderships which don't give incentives to state. They fulfill their own interest. So these were security dilemma of security state. Israel was a security state, but it has a brilliant foreign policy. How? Before Israel was established, it has a strong foreign policy. इसराइल के बनने से पहले इसराइल की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी और when states are based on ideology, जब states आइडियोलॉजी के बेस के बनते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी स्ट्रांग होती है. There are 7 elements that define foreign policy of Israel. 7 elements होते हैं जो इसराइल की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं. नंबर 1, creating and sustaining Jewish territory with significant Jewish populations. इनका एम ये था कि हम एक Jewish स्टेट बनाएंगे और Jewish स्टेट में टेरिटरी में जस्ट ओनली Jewish स्टेट रहेंगे, Jewish people रहेंगे. So the first element of their foreign policy nullified the second point of dilemma of security state. मैंने आपको ये कहा था जब सिक्योरिटी स्टेट होता है तो उसमें एथनिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, सेक्टेरियन प्रॉब्लम आ जाते हैं, सोशल करेक्टरिस्टिक आ जाते हैं जिसके नतीजे में स्टेट कमजोर पड़ जाता है. बट इन केस ऑफ इसराइल वाज सिक्योरिटी स्टेट बट देयर वाज नो एथनिक. वहां कोई सेक्ट नहीं था, वहां कोई एथनिक मसले नहीं थे, वहां सब जितने भी लोग थे सारे ज्यू थे. दे वर ऑल ज्यू. नंबर 2, डेवलपिंग वायबल इकोनॉमी. टुडे एलिमेंट नंबर 2, डेवलपिंग वायबल इकोनॉमी. इसराइल की आप इकोनॉमी चेक करें, इट इज वन ऑफ बेस्ट इकोनॉमिक हब इन वर्ल्ड. Number 3, finding and retaining major power political support. The third element of foreign policy Israel says that they will build very good relations with superpowers. Before World War II, United Kingdom was superpower. There was a strong Jewish lobby who had brilliant relationship with Britain. After World War II, when there were two superpowers, USSR and Britain, Israel have best relation with USA and USSR. They neither compromised with USSR. They both were superpower. They had brilliant relation with USSR and USA. Number 4, the fourth element, foreign policy of Israel. Never again syndrome. Mean no will beat them again. They are unbeatable. No power in world can defeat them again. Just like as you know the history of Jewish, they are during the prophet, they are the people from Prophet Masih. They were removed from Jerusalem more than 1000 years ago by Christians. So they have fourth element, that never again syndrome. They will not be defeated by anyone now. Number 5, evolving defense policy of Israel. They have brilliant defense policy. Number 6, access to water and fossil other fuels. Look, if you just visit the map of Israel, they have problems of water and they have problems of oil. These are the big problems. So, for the sake of water problem, do you know in 1956 during the Suez Canal crisis, Israel with France was very involved because there were interest of Israel in Suez canals. Number 7 is the element we will discuss later. It is related with our topic, Israel foreign policy and the Islamic world, Muslim state. The foreign policy of Israel says
seeking accommodation with neighbors when available, कि हम नेबर्स के साथ अकोमोडेट करेंगे। अगर कोई नेबर हमारे के साथ अकोमोडेट करना चाहता है तो हम उसके साथ ब्रदरली रिलेशंस बनाएंगे। एंड न्यूट्रलाइजिंग एग्जिस्टिंग थ्रेट, अगर कोई नेबर हमारे लिए थ्रेट बनता है हम उसे खत्म कर देंगे। एंड इन इंटरनेशनल रिलेशन there is a concept that is called preemptive strikes. In history, in international law, there was no concept of preemptive strike. The preemptive strike was introduced by Israel. उन्होंने preemptive strike का concept लाया इंटरनेशनल लॉ में, उन्हें लीगल करवाया। वो ये था preemptive strike कि वो हमला कर देते थे। हमला कर देते थे इसलिए क्योंकि उससे पहले कि वो उन पे हमला करें। Just like take example, in 1960s, इसराइल के कुछ एयरप्लेन्स ने 2 मिनट में more than 650 एयरप्लेन्स, जेट प्लेन्स ऑफ सीरिया डिस्ट्रॉय कर दिए। more than 650. Till that, Syrian Air Force was very strong. जब ये बात इंटरनेशनल लॉ में आई तो उन्होंने कहा कि इट वाज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। अगर हम हमला ना करते तो वो हम पे हमला कर देते। So, the preemptive strike become legal in international relations. So, Israel relation with Muslim states. Look, from 1948 till 2022. In 1948, Israel and Arab world fought a war. 1948 में इसराइल और जितनी भी अरब वर्ल्ड थी उन्होंने एक जंग लड़ी। Later on, we witnessed the Sinai War. Lebanon, Egypt, Syria, they were all involved in war with Israel. The war of attritions, the war with Lebanon, mean its neighboring state fought different war with Israel. There was never ever normalizing ties. उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। 1953 टर्की was first Muslim state who recognized Israel as a state, and Iran was second state who recognized Israel. So after war, it is the conflict of Israeli-Palestinian conflict. The main conflict in Middle East is Israeli-Palestinian conflict. Arab world and many Muslim countries are angry over what happened to Palestine. आज भी जितने भी अरब वर्ल्ड है वो angry हैं कि जो फलस्तीन के साथ हुआ। They just seek the statehood of Palestine. So after the 1967 war, there was move toward negotiations. There were movement toward diplomacy. How to resolve conflict? अब स्टेट ने कहा कि अब conflict को resolve करना है. We cannot accept war anymore. In 1970s, there was effort to resolve conflict. USA, United States of America, has been the major actor to conflict. Because USA is supporting Israel financially and militarily. It is the only country that can exert pressure on both conflicting parties. Later on, we saw official mediations. In official mediations, Russia was involved, United States of America was involved, European Union was involved, Arab League was involved, and United Nations was involved. First of all, Camp David Agreement 1978. सबसे पहले Camp David Agreement हुआ. After 1967, Egypt was in a state of war with Israel since 1948. Egypt, as we know, has important role in Arab world. It had intellectual influence in Arab world for centuries. During 1967, when Jamal Abdel Nasser, he was president of Egypt, defeated from Israel. In 1967, Arab-Israel war, Sinai Peninsula was occupied by Israel. It was biggest threat to Muslim world. So when Jamal Abdel Nasser died,
1973, Egypt realized that they could not defeat Israel through war. अब इजिप्ट ने रियलाइज किया था कि अब वो जंग के साथ इसराइल को शिकस्त नहीं दे सकते, because USA was supporting Israel. They could do nothing unless USA withdraw its support from Israel. हमने देखा कि नासिर के बाद अनवर सादात साहब आते हैं। अनवर सादात साहब ये कहते हैं कि हम इसराइल के साथ अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। So Egyptian President Anwar Sadat turned toward diplomacy. He aimed to establish coordinated relations with Israel. We could not go to war. This thinking resulted in Camp David. Anwar Sadat visited to Jerusalem on November 17, 1977. He was the first man from Arab world who visited Jerusalem. He addressed Israeli parliament and he was the first Arab to address Israeli parliament. Afterward, Egypt was very isolated from Arab world. जब अनवर सादात की विजिट हुई तो जितने भी अरब स्टेट थे उन्होंने किनारा कशी कर दी, उन्होंने इजिप्ट को आइसोलेट कर दिया। So Sadat made a firm commitment of peace in 1977, which resulted in Camp David Accord. अब what were demands from Sadat? During negotiation, you make demands. In 1977, Sadat wanted Israel to withdraw from West Bank, Gaza Strip, and from Golan Heights. 1977 में सादात साहब ने कहा कि आप विड्रॉ करें वेस्ट बैंक से, आप गजा स्ट्रिप से विड्रॉ करें और गोलान हाइट्स से भी विड्रॉ करें। And Sadat asked Israeli that PLO should be recognized as a spokesperson of Palestinian. आप PLO को फलस्तीन की रिकॉग्नाइज्ड स्पोकपर्सन डिक्लेयर करें। सिटी ऑफ जेरूशलम शुड बी इंटरनेशनलाइज्ड। आप सिटी ऑफ जेरूशलम को इंटरनेशनलाइज कर दें। आप सिनाई पेनिनसुला should be returned to Egypt. So all Egyptian demands were unacceptable to Israel. Israel said, we can't accept your demands. So later on, Sadat and Israeli accepted Carter recommendations. No agreement was based on UN resolutions. जब इसराइल ने कहा कि हम आपकी डिमांड मान नहीं सकते तो 12 दिन वो बैठे यूएसए में। यूएसए प्रेसिडेंट ने उन्हें बिठाया कि यू शुड कम अप विद अ एग्रीमेंट, आपको एक एग्रीमेंट के साथ आना पड़ेगा। सो एग्रीमेंट वर बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशन, यूएन की रेजोल्यूशन 242 एंड 338 and the resolution 242 and 338 agreement were basis of peace plan between Israel and Egypt to reach agreement. ये जो रेजोल्यूशन 242 and 338 रेजोल्यूशन वो थे जिनके पास 1967 के बाद इसराइल और इजिप्ट के दरमियान कभी भी जंग नहीं हुई। What were agreements? Let's explain the agreements. के agreements थे क्या? They, conflicting party, both mean Israel and Egypt wanted peace for all neighbors. And future of Sinai and peace between Israel and Egypt we concluded in 3 months. कि जो फ्यूचर ऑफ सिनाई है और पीस इसराइल और इजिप्ट के दरमियान वो 3 माह में बिल्कुल पीस एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसराइल एग्रीड टू विथड्रॉ फ्रॉम सिनाई इन 3 years. इसराइल ने एग्री किया कि वो सिनाई पेनिनसुला से निकल जाएंगे लेकिन 3 साल में। So in return, Egypt agreed to establish full diplomatic relation with Israel and allowed Israeli ship to cross from Suez Canal and Gulf of Alpha. So this was a turning point. Egypt was first Muslim state, means first Arab world state which recognized Israel. और इसराइल को ये कहा गया, इफ यू रिमेम्बर कि हमने 4th एलिमेंट पढ़ा था, 5th एलिमेंट, द फॉरेन पॉलिसी एलिमेंट ऑफ इसराइल वाज एक्सेस टू वाटर। उन्हें वाटर का एक्सेस चाहिए और फॉसिल फ्यूल का एक्सेस चाहिए। सो इन्हें वाटर
Hello, hello. Can you hear me? Hello. Yes, brother. Yes, brother. We are hearing. I am very sorry. Yes, I So know. there Like, was internet breakdown. I am very sorry. no problem. If So you have an alternative, I you have. was You can. Thank you. on first agreement. Israel got diplomatic relation with Egypt, and number two, it got access of water. So in this case, Anwar Sadat got Nobel Prize for peace. In reaction, Arab world boycotted Egypt. जितना भी अरब वर्ल्ड था उन्होंने इजिप्ट को बायकॉट कर दिया. Later on, Anwar Sadat was assassinated by Islamic extremists. These two agreements resulted in peace between Israel and Egypt in 1978. So, number one, peace agreement ने रिजल्ट में ये आया कि इसराइल को रिकॉग्नाइजेशन मिल गई इजिप्ट की, और उसके नतीजे में इजिप्ट को बायकॉट कर दिया गया अरब वर्ल्ड से, एंड अनवर सादात व असासिनेटेड, उन्हें कत्ल कर दिया गया था. सो इसराइल वाज स्टकिंग विद इट्स फॉरेन पॉलिसी. उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक एलिमेंट था कि उन्हें अकोमोडेट करना है नेबर्स के साथ, उन्हें नेबर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने हैं. अगर वो अकोमोडेट नहीं करते हैं तो वो यूज ऑफ फोर्स करेंगे. सो वी सॉ ऑस्लो अकॉर्ड. ऑस्लो अकॉर्ड में नॉर्वे ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया. नॉर्वे प्लेड ए वाइटल रोल इन 1983. Norwegian researcher Roald Larsen set up secret meeting for PLO representative Ahmad Qura and Israeli history professor Yasser. जो इसराइली प्रोफेसर और पीएलओ के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में 14 सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुए ओस्लो में. और ये जो 14 सीरीज ऑफ मीटिंग थे, दे वर केप्ट सीक्रेट फ्रॉम पब्लिक. उन्हें पब्लिक से सीक्रेट रखा गया. इसलिए सीक्रेट रखा गया कि इन रिएक्शन नेगोशिएशन खराब ना हो. द अकॉर्ड, ऑस्लो अकॉर्ड वाज साइंड ऑन 28 अगस्त 1993. ये जो ओस्लो अकॉर्ड थी वो 28 अगस्त 1993 को साइन की गई थी. एंड यासिर अरफात एंड इसराइली प्राइम मिनिस्टर एंड बिल क्लिंटन वर इन्वॉल्व. Israel, this Oslo Accord provided framework for future of Israeli-Palestinian relations. It was the point, it was possible कि अब इसराइल और फलस्तीनियन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है. ये तारीख का वो पॉइंट था जहां हमें लगता था कि अरब वर्ल्ड और इसराइल के दरमियान का मसला हल होगा. वो कैसे? This Oslo Accord provided framework for future of Israeli-Palestinian relations. Israel would gradually give control of Palestinian territory to PLO in exchange of peace. इसराइल ने कहा, इन केस अगर आप हमारे साथ पीस करते हैं, जितनी भी फलस्तीनियन टेरिटरी है हम आपको वापस कर देंगे. उस एग्रीमेंट में यह कहा गया था कि फॉर एग्जांपल जो एरिया ए है, जो एरिया ए है वो फलस्तीन को किया जाएगा, और जो सराउंडिंग एरिया है वो इसराइल को किया जाएगा. एंड द सिक्योरिटी विल बी टू इसराइल. मीन दो सिटीज हैं इन केस. एक सिटी होगा वो फलस्तीन का होगा, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फलस्तीन की होगी, लेकिन जो सिक्योरिटी होगा वो इसराइल की होगी. सो करेगा गोलान हाइट से, बट इसराइल स्टेट फेल्ड. जो ओस्लो अकॉर्ड थे ये फेल हो गए बिकॉज वायलेंस वाज इंक्रीज. जैसे कि मैं मेंशन कर चुका हूँ, जो 14 मीटिंग हुए थे वो सीक्रेट मीटिंग थे. जब पब्लिक
Excuse me, brother. So Sorry Oslo for Accord did. interruption. If you Ye- hello, sorry for interruption. Hello. If you would make it Hello. concise, that will be quite. Yeah. Oh, I'm going to make it concise. Yes, we will also Okay. have 5 to 6 minutes for Okay. question and answer No, session. there are only three peace agreements. Okay. Just to give So their intro, just give their intro and make it short. Oslo Accord failed. So in case Israel Prime Minister Rabin was assassinated. And number two, let me introduce Iran was the second state which recognized Israel. But after Iranian revolution, there was always a proxy war of Iran and Israel. After Oslo Accord, we witnessed Camp David summit. Camp David summit, three peoples were involved. Yasser Arafat, President of USA, and Israeli Prime Minister. After Camp David summit, we have Taba summit, but Taba summit was failed. We saw कि 1948 के बाद इसराइल जो है 6 जंग लड़ चुका था, 6 war. The 1948 war, Sinai Peninsula war, 6-day war. After 1977, there were always peace agreement. जब भी हुए peace agreement हुए, Camp David Accord हुआ, फिर Oslo Accord हुआ, both were failed. फिर Camp David Summit 2 हुआ, it was also failed. Taba Summit was failed. Roadmap for peace was failed. फिर अरब पीस इनिशिएटिव ये आया 2002 में और 2007 में, it was completely failed. Later on, we come to 2018, Abraham Accord, Trump peace plan. It was a vision to improve ties between Palestinian and Israeli people. It was peace treaty between Prime Minister Benjamin Netanyahu and Arab state. But in this peace plan, Palestinian representative was not invited. जो फलस्तीनियन रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया था. प्लान वाज गिवन बाय ट्रम्प सन इन लॉ जेरेड कोशनर. ये जो ट्रम्प पीस प्लान है ये उनके सन इन लॉ ने दिए थे जिनका नाम था जेरेड कोशनर. दिस प्लान वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इकोनॉमिक पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट. On 22nd June 2019, they released economic part and January 2020 they released political part. हमने देखा कि इसके दो पार्ट थे. ट्रम्प पीस प्लान इब्राहिम अकॉर्ड के बाद यू विटनेस आपने देखा कि सऊदी रिकॉग्नाइज इसराइल, बहरीन ऑफिशियली बहरीन रिकॉग्नाइज इसराइल, and there were more than $476 billion investment between United Arab Emirates and Israel. And in 21st century, we witnessed कि इसराइल और उनके नेबर्स, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, फोर्थ एलिमेंट थी, वो हमें नजर आया फिफ्थ एलिमेंट के आप नेबर्स के साथ अकोमोडेट करें. अगर अकोमोडेट नहीं कर सकते बिकॉज nobody can bear the causes of war. 21st century में आप war afford नहीं कर सकते. It is century of globalized economy. So how आप चेक करें कि यूक्रेन रशियन वार हुआ, कैसे ऑयल प्राइसेस, कैसे फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन पे गया. सो आई थिंक दिस वाज लेक्चर एंड नाउ आई एम ओपनिंग फ्लोर फॉर कमेंट्स. आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर आप ये समझ नहीं है आप वो पूछ सकते हैं. हेलो, कैन यू हियर Thank you, मी? Nadeem. It was हेलो. wonderful session from your side. Yes, am I audible to you? Hello, Yes, Amjit. Yes, bro. Nadeem, am I audible to you? Yes, Yes, bro. I Amjit. was talking about your
Yes, I was talking about your session. You went wonderful, and not only just history, but you also went with the current political problems, social problems as well, economic, and relationship with Arab and other countries as well. So no doubt you tried your best, and it was best. Really, it was best from your side. Now we will move towards the question answer. If anybody has any question, he or she may ask. If not, then I have a short question with you that why the USA has that much interest in Israel that it helps it at every moment from history to up to the date. Thank you. Hello, hello, Amjad. You are Ji, asking that why United States of America is supporting Israel from ji, history ji, to nowadays. Look, Amjad, eh, right. ek, Yes, I'm listening. as I mentioned that there was a period, the period of enlightenment, where emancipation came in. जब एमेंसिफिकेशन क्या आता है तो ये होता है जो यूएस होते हैं वो साइंटिफिक सोचने लग जाते हैं और उनके डिफरेंट डियास्पोरास होते हैं। आप देखें 1970 में जो रोथ चाइल्ड है वो शख्स Excuse me, brother. We are unable to listen you. I think there could be some network issue. Am I audible to you? और I think there is voice problem. there is a strong lobby of Jew community in United States of America, not in America but in their Congress. Just take example of होल्ड इसलिए है अमेरिका उन्हें सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है वहाँ। Right, Nadine. Thank you. Now, if anybody else has any question, we will have it. Otherwise, we are going to end our session.